Assalamualaikum, students and viewers. Today, our agenda is making numerical lists using the range function. Using range function, we can make a list of numbers, simple statistics with a list of numbers, list comprehensions, working with part of a list, slicing a list, looping through a slice, copying a list, and tuples. Defining a tuple, looping through all values in a tuple, and writing over a tuple. Making numericals lists. Lists are ideal for storing sets of numbers, and Python provides a number of tools to help you work efficiently with lists of numbers. Once you understand how to use these tools effectively, your code will work well even when your list contains millions of items. Now using the range function. Python's range function makes it easy to generate a series of numbers. For example, you can use the range function to print a series of numbers like this. Now, write a code in Jupyter how it works. Go to the Jupyter interface. Here we write a code of how to use a range function. For example, for value in range, now define range 1 to 5 colon. Next line, print value. Now run the program. Now value from start from 1 and end at 4. It should print the numbers from 1 to 5. It does not print the number 5. To print the numbers from 1 to 5, you would use range 1 to 6. For example, for value in range 1 comma 6 is the range colon print value. Now run this program. Now look at, start from 1 and end at 5, and our range is 1 to 6. This time the output starts from 1 and ends at 5. Now go to slide. Use range function to make a list of numbers. Write code in Jupyter Notebook. Now we write an example about this. Go to the Jupyter Notebook. Here, for examples, numbers is equal to list range is 1 comma 6. Then next line, print numbers. And even even numbers
equal to list range. We define here range is start from 2 to comma 11 and 2 to extend after 2. It means start from 2, then add 2 to 3 and 5, 7. Now look, print even numbers. Now run this program. देखें जी, पहले जो नंबर्स की लिस्ट है वो 1 से 5 तक है, जिसमें हमने प्रिंट नंबर्स करवाया है 1, 2, 3, 4, 5, और जो इवन नंबर्स है उसमें हमने रेंज दी है 2 से 2 to 11, और वो उसमें जो हमने डिफरेंस रखा है लास्ट में 2 नंबर का, तो स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड देन 4, difference is 2, and after 4 is 6, and also difference is 2, 8 and 10, और रेंज क्योंकि 11 तक थी तो वो रेंज जो है वो एक नंबर पहले जो है नंबर आता है उस पर 10 तक जो है ये रेंज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो है हम हमारा अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, स्लाइड्स पे, कि उसमें अब हमने क्या डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर हाउ you might make a list of the first 10 square numbers, that is the square of each integer from 1 through 10. Okay, write a code in Jupyter. Go to Jupyter. Now we write a code about integer from 1 through 10 squares equal to, we add in list or value in range. We already said that from 1 to 10, it means range would be 1, 11, and then in the function colon. Now square is equal to value, or 2 stars means power और 2। तो हमने क्योंकि 1 से 10 इंटीजर नंबर्स का स्क्वायर भी मालूम करना है, तो और उसको हमने लिस्ट में ऐड भी करना है, तो स्क्वायर लिस्ट क्योंकि एम्प्टी है और ये जो ये लिस्ट है इधर ये ब्रैकेट्स जो हैं इसमें एम्प्टी है, और इसमें ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड जो है हम यूज़ करते हैं स्क्वायर्स डॉट अपेंड का जो मेथड है उसमें हम स्क्वायर की जो वैल्यू है वो दे देंगे। तो जो वेरिएबल्स स्क्वायर में आ रहे होंगे 1, और उसको स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1, और वो अपेंड हो जाएगा लिस्ट में 1। देन सेकंड नंबर इज 2, 2 2s are 4 and append in list 4 and then 9, और हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि आया, उस हिसाब से प्रिंट होता है जो जवाब आंसर हमें आना चाहिए 1, 4, 9 and 16. Okay, now run this code. Ooh. One. Square is value into square, squares, square, print, square. Okay, our range is
for value in range 1 to 11, sorry, square is value square, and squares dot append square print squares. So if we print squares, the result is different, and if we print square simply, you look, the result is different. Oh, now look at this. Square and square, squares dot append square and print square.